So we have almost come to the concluding part of the syllabus. We first discussed the tower house part. Then we come to the KDD process. Here we have gone through the pre-processing. Then we come to the supervised learning techniques and some algorithms under that, and then unsupervised learning techniques where we focus mainly on the clustering technique. Now today also we go through one such technique that is very important, no doubt, known as association rule mining. Okay, so today we are going to discuss association सर rule. आपका स्क्रीन नहीं दिख रहा सर. Okay, let me check. Skin is not visible. I'm sharing it again. Not visible sir. This should be visible now. Let's see. Is it visible now? क्या अभी स्किन दिखाई दे रहा है आप लोगों को? Yes sir, now it's visible. Okay, thank you. Okay, let's start this. Association rule mining. This is the concept where we use in our current online marketing and everywhere, of course. So the term market basket analysis. I hope you all know that what is basket. आप कभी भी कहीं मॉल में जाते हो तो आप एक बास्केट कैरी करते हो. तो उस बास्केट में आप क्या करते हो, जो भी आपका सामान है वो पुट करते हो, राइट? But our human tendency is to forget something, or our human tendency is to recall something for by looking at a particular specific thing. Suppose मॉल में कैसे सामान रहते हैं आपका, आप वो टी वाला सेक्शन में गए. टी वाला मतलब जो सपोज जहाँ टी बैग्स और ये सब रखा हुआ है, वही आपको सामने दिखाई देगा मिल्क, शुगर, लाइक दैट. वैसा वो लोग क्यों करते हैं? क्योंकि ये टेंडेंसी है. आप जब आपने देखा टी बैग्स लिया आपने, साथ में आपका प्रोबेबिलिटी है, हाई प्रोबेबिलिटी है कि आप या तो मिल्क ले लोगे, एंड इफ यू प्रीफर सम शुगर देन शुगर खरीद लोगे. तो क्या करोगे, उस बास्केट में यू विल पुट टी बैग्स और along with that milk bags, sugar bags, like that, right? So that's concept, that what are the items you actually purchase, or there's a probability to purchase together. This brings this market basket analysis. ठीक है, जो हमारा ये है कि हम टी के साथ मिल्क ले रहे हैं और साथ में सपोज शुगर ले रहे हैं. ठीक है, तो ये दो तीन आइटम जो हम साथ में क्या होता है आप खरीद रहे हो, तो इससे ही ये कॉन्सेप्ट आता है आपका मार्केट बास्केट एनालिसिस. तो वो आप मिल्क खरीदने जाओ, ठीक है, कोई मिल्क पार्लर में जाके आपने देखा कि साथ सामने रखा हुआ है एग्स और ब्रेड. तो देयर इज ए टेंडेंसी दैट आप ब्रेड भी साथ में लेके आओगे, और इफ यू प्रिफर एग देन एग भी साथ में लेके आओगे. तो ये सारे कॉन्सेप्ट लेके ये मार्केट बास्केट एनालिसिस किया था. हालांकि ये जो टर्म है पहले जो यूज किया गया था वो एक वाइन शॉप की इसमें आया था. ठीक है, मतलब द फर्स्ट दिस concept being bought, it's actually being derived from the actually wine shop. What happens with एक वाइन शॉप के सामने कुछ और ऐसा आपका ये रहता है जो हम हिंदी में क्या बोलते हैं चखना, और जो दिस इज द कॉन्सेप्ट एक्चुअली. ओके, सो वो क्या होता है, जो भी वाइन खरीदते हैं वो साथ में कुछ ऐसा सामान भी साथ में लेके जाते हैं. तो ये क्या हुआ, ये दोनों साथ में खरीदने का जो टेंडेंसी है, इससे वो दुकान वाले जो हैं सामने लगाते हैं, जो दुकान अपना ठेला लगाते हैं, उसका भी क्या हो रहा है, सेलिंग ज़्यादा बढ़ रहा है. तो इस particular concept लेके you will surprise to know that this concept is bought by means one Indian, no doubt. Okay, Agrawal. So he has bought this concept, and there is an algorithm known as a priori algorithm, which we will later check. Okay, the idea is totally based on this.
So now again, let's come back to that actual part. So market basket analysis is a modeling technique that helps to identify which items should be purchased together. Okay, so there are large number of items like suppose tea, coffee, milk, sugar. Then among these, the customer buys the subset of item as per the requirement, and market gets the information of items which customer has purchased together. ये आपसे ही वो कस्टमर से ये इंफॉर्मेशन ले रहे हैं कि क्या क्या आइटम जो है ना आप फ्रिक्वेंटली खरीदते हो साथ में, ठीक है। आप मीट एंड फिश चैम्बर में जाओगे, कोई भी मॉल में आप मीट एंड फिश चैम्बर में जाओगे तो आपको दिखाई देगा जहाँ ये सब मीट वगैरह रखा होता है उसके सामने आपका ये मसाला के पैकेट रख देंगे, या तो आपका जो लहसुन वगैरह जो है वो सब रख देंगे। तो क्यों रखते हैं वो लोग? उन्होंने देख लिया कि ये जो आइटम आप साथ में खरीद रहे हो उसके साथ क्या हो रहा है, शेयरिंग बढ़ रहा है, टुगेदर दे हैव बीन परचेज्ड टुगेदर मोर फ्रीक्वेंटली, right? So the market uses this information to put the items on different position. इसीलिए मॉल में वो ये सारे आइटम्स एक एक पर्टिकुलर चेम्बर, एक एक पर्टिकुलर क्या बोल सकते हैं ब्लॉक में रखा रहता है, और उस पर सारे आइटम रखा जाता है जो साथ में कस्टमर परचेज करते हैं, ठीक है। नाउ implementation of market-based analysis. The market basket analysis is used to decide the perfect location where the items can be placed inside the store. जैसे मैंने अभी तक 2-3 एग्जाम्पल दे चुका हूँ, उससे आपको तो समझ में आ गया होगा लोकेशन का क्या मतलब है। जैसे मैंने कहा मीट एंड चेम्बर लोकेशन में आपको क्या ये छिलका निकाल के रखा हुआ आपको ये मिल जाएगा, क्या बोलते हैं अनियंस मिल जाएगा और पोटेटो मिल जाएगा। तो एक पार्टिकुलर लोकेशन डिसाइड किया जाता है जहाँ पे ये सारे आइटम जो फ्रीक्वेंटली परचेज टुगेदर होता है उसको रखा जाए, राइट। So if the customer buys a coffee, it is possible that the customer may buy milk or sugar along with coffee. So keeping the coffee and the sugar next to each other in store will be helpful to customers to buy the items together and improve sales of the company. इसलिए आप देखना हाइपर सिटी जो है, ठीक है, आप लोगों में से कोई बहुत लोग गए भी होंगे हाइपर सिटी में, ये सारे चीज बहुत प्रॉपरली इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। ऑफ कोर्स दे यूज दिस टाइप ऑफ एल्गोरिथम इम्प्लीमेंटेड बेस्ड सॉफ्टवेयर, ठीक है। ये प्रायोरिटी एल्गोरिथम ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड किया होता है, इसमें बस वैल्यू पुट करना पड़ता है, तो लोकेशन अपने आप डिटरमाइन किया जाता है। तो इसलिए हाइपर सिटी हो गया और ये सब हो गया, ये बहुत सक्सेसफुल रहा है, राइट, ठीक है, very successful in this particular field. So the problem of large volume transaction can be minimized by using differential market-based analysis, which is capable of finding interesting results and eliminates the large volumes. Okay, so जहाँ तहाँ बहुत सारे क्या है, आप आइटम्स रखने के बजाय आप वो सारे आइटम रखो जिससे आपका प्रॉफिट ज़्यादा बढ़ रहा है, right? Now we come to some technical terms that we have to know. कुछ technical terms we will discuss, like frequent item sets, closed item sets, okay, association rules. Let's come to the first one, frequent item sets. These are the item sets. Item set मतलब समझ रहे हो ना, sets मतलब आप जानते हो collection of elements, और item set मतलब collection of items, ठीक है। आप ये frequent item set मतलब वो सारे items जो क्या है repeatedly, frequently appear हो रहा है, right? So frequent item sets are used in association rules. An item set is said to be frequent if X support is not less than a minimum support result. ये थोड़ा सा मैं जब सपोर्ट पढ़ाऊंगा तब समझ में आएगा, हाल में ये समझ लो सपोज 5 times एटलीस्ट वो आइटम जो है उस डेटा सेट में आपको मिल रहा है, तब आप बोलोगे कि हाँ ये फ्रीक्वेंट है, frequent item set है। जो मैं बोल रहा हूँ 5, that is the threshold value, right? So a frequent item set, sorry, so a frequent item set is a set of items that may appear at least in predefined number of transactions. Okay. Steps to find frequent item sets.
A level-wise first step one, level-wise search can be carried out to find the frequent one items, that is set of size one. एक item को पहले हम देखेंगे वो कितना appear हो रहा है. Then we go for finding frequent two items, मतलब दो item को combine करके वो दो item कितना appear हो रहा है. Then three, like that. So all maximum frequent item sets are searched in this step. तो पहले एक करके स्टार्ट किया, उसके बाद दो आइटम को लिया, उसके बाद तीन. तो मैक्सिमम कितना आइटम्स फ्रीक्वेंटली एक साथ अपीयर हो रहा है, दैट्स यू नीड टू फाइंड आउट. सो ओवरऑल यू जस्ट नीड टू नो दैट फ्रीक्वेंट आइटम मतलब जो दोस आइटम्स which are appearing more than a definite threshold value in that particular data sheet, right? Then closed item sets. Consider two items, say x and y. याद ध्यान से देखना इस if each item of x is in y, but there is at least one item of y that is not in x, then y is not a proper super item of set of x, and in this case this item set is closed. If x is closed then and frequent, then we'll call it as a closed frequent item set. मतलब x एक सेट है, y एक सेट है, जो भी एलिमेंट्स x में है, जितने भी आइटम्स x में है, सारे चीज कहाँ है आपका y में भी है. बट ऐसा हो रहा है कि कोई एक तो आइटम यहाँ y में है जो x में अपियर नहीं हो रहा है, राइट, x में नहीं मिल रहा है. तो हम y को x का प्रॉपर आइटम सेट नहीं बोल सकते. जैसे आप जानते हो ना, सेट, सुपर सबसेट. इसलिए ये जो y है, वी कैनॉट call y as a super item set of x if at least one element exists in y that is not in x. So we'll say that this item set is closed. And if this X, which is closed now, because one item we can't find here, then if it is appearing more than the threshold number, then we will call it as a closed frequent item set. Then we have this term association rules. From the name itself, क्या हो रहा है, हम एसोसिएट करने की कोशिश कर रहे हैं. जैसे अभी आपने क्या क्या लिया, एक्स लिया, वाई लिया, और एक्स को वाई के रेस्पेक्ट पे हम क्लोज बोल रहे हैं. याद रखना, अगर वाई होता ही नहीं तो एक्स को हम क्लोज कहाँ से बोलते हैं, राइट? तो ये सारे चीज, ये जो एप्रायरी एल्गोरिथम है जो भी है, हम कुछ एसोसिएशन निकालने की कोशिश करते हैं. ठीक है, किसमें, कुछ अलग अलग आइटम सेट्स के बीच कुछ एसोसिएशन निकालने की कोशिश करते हैं. जैसे मैंने कहा था कि आपने मिल्क खरीदा, यू परचेज मिल्क, देन देयर इज एन एसोसिएशन बिटवीन मिल्क एंड ब्रेड. कैसे कि आप जब मिल्क खरीद रहे हो तो साथ में आप वो दूध भी खरीद रहे हो, राइट? तो नाउ योर एम, okay, is to establish that association rule, is to find out that association rule, right? So these are the association rules. Let's go to the textual part again. So the objects or items from the relational databases, transactional databases, or other information repositories are considered to find frequent patterns. ठीक है, association and correlation. Frequent patterns, ये पैटर्न जो मैंने बोला ना अभी, यही हमारे लिए पैटर्न है. क्या आप जब मीट खरीद रहे हैं, सपोज 1 किलो अपने चिकन खरीदा और साथ में आपने खरीद रहा है क्या, सपोज some lessons, some amount of lessons. So say 100 gram of lessons, and then suppose 100 gram of chopped onion. Okay. आजकल तो मॉल में ऐसे लगता है कि सारे चीज आपका रेडी रखता है. आप जस्ट जाओ, आपके सामने वो रहेगा, अलग अलग से डब्बा रहेगा, आप बस उठा के ले आओ, आपको सिर्फ बनाना है. ठीक है. सो ये सब ओनली बेसिस ऑन दिस एसोसिएशन रूल कि ये चीज देने से ये है. तो क्या है, ये जो पैटर्न, इसी को हम पैटर्न बोलते हैं कि ये वाला पैटर्न फ्रीक्वेंटली अपीयर हो रहा है. अब इसी चीज को आप डेटा के साथ कंसीडर करोगे तो ऑब्वियसली वी आर एनालाइजिंग दिस डेटा, वी आर ट्राइंग टू फाइंड द फ्रीक्वेंट patterns of those data, the data set, right? So association rules search for interesting and relationship among for the items in a given data set by examining this transaction. For example, frequently versus item sets can be easily found out by examining the job cart. आप सभी को पता ही होगा कि जॉब कार्ड क्या है. आप आजकल जैसे आप लोग ऑनलाइन शॉपिंग यूज करते हो, उसमें आपको अपने आप याद आता है, देखते हो, आप जानते हो ये चीज. This helps in advertising or the placement of goods in the store.
आप ये भी जानते हो कि आइटम्स फ्रीक्वेंटली बॉट टुगेदर, ये आप देखा होगा शायद ऑनलाइन शॉपिंग में, देखा है या नहीं देखा है? Have you seen that or not? देखा मतलब नहीं देखा है, किसी ने ऑनलाइन शॉपिंग Yes, किया sir. ही नहीं। अच्छा, एक जन ने देखा है, बाकी लोगों ने नहीं देखा है। तो कोई बात नहीं, देखना एक बार वो फ्लिपकार्ट या तो अमेजोन जो भी है, मिंत्रा, ये सब खोल के देखोगे, कुछ एक खरीद रहा तो नीचे आपको आ जाएगा फ्रीक्वेंटली बॉट आइटम्स और आइटम्स बॉट टुगेदर। दिस इज नॉट अनदर द कॉन्सेप्ट ऑफ एसोसिएशन रूल्स। ठीक है, एसोसिएशन रूल्स की वजह से हम ये शॉर्टकट डिजाइन करते हैं, हम नहीं, जो ये बड़े बड़े वेंडर्स हैं वो लोग डिजाइन करते हैं ये चीज। ठीक है, so association rules have the general form I1 implies I2. But do remember that I1 intersection I2 is equal to 0 because these two are different items. Okay, milk intersection bread is equal to 0 because milk and bread are two different items, right? So association rule this has this general form. This rule can be read as given that someone has purchased the item from the set I1, then there is a tendency that someone is also going to buy the items from the set I2. ठीक है, अब आ गया समझ में कि कोई कुछ चीज आप I1 से ले रहे खरीद रहे हो, तो ये इससे ये प्रोबेबिलिटी है कि आप कोई एक आइटम एटलीस्ट आप I2 से खरीदोगे। बट ये जो I1 इंटरसेक्शन I2 है, क्या है? दिस इज 0, राइट? So that is the common or general form of a association of an association rule. Now coming to the next concept, and this is very, very important. So large item sets. We are considering now large item set. It is a set of single items from transactions. If some items occur together, then they can form an association. We know that this is fact. Now we come to these two technical formulas. First one is support. Support क्या है? Okay, तो formula एक बार देख लेना. It is the percentage of the transaction in which the item appear. If A implies B, then support of A implies B is equal to number of tuples containing both an A and B divided by total number of tuples. ये फॉर्मूला आप लोगों ने लिख लिया, तो ये क्या है मैं बताता हूँ। सपोर्ट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इस एसोसिएशन रूल का हम सपोर्ट निकाल रहे हैं। तो ऊपर आपका क्या है? नंबर ऑफ टुपल्स कंटेनिंग बोथ ए एंड बी टुगेदर कितना अपीयर हो रहा है, कितने नंबर ऑफ टुपल्स में अपीयर हो रहा है, ठीक है, वो नंबर डिवाइडेड बाय ओवरऑल आपका उस पूरे जो सेट है पूरा, अगर टेबल मान के चल रहे हो, टुपल्स बोल रहे हो, तो टोटल नंबर ऑफ टुपल्स क्या है वो है। तो number of tuples defined means containing both A and B together divided by total number of tuples will give you the support of the association rule A implies B. So the support for an association X implies Y is the percentage of transaction in the database that contains X union Y. ठीक है, ऑब्वियसली दोनों जब साथ में आ रहे हैं, साथ में आ रहे हैं, तो उसी का ही हम परसेंटेज निकाल रहे हैं। तो ये फॉर्मूला जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल तो आप लोग क्या करते हो, डायरेक्ट टूल्स यूज करते हो, ठीक है, तो आप वहाँ पे बने बनाई और मतलब इम्प्लीमेंटेड ही रहते हैं ऑलरेडी। आप उस चीज को एनालिसिस नहीं करते। आजकल जो मैंने देखा है अभी प्रेजेंटेशन में, एक दो प्रेजेंटेशन मैंने जो अटेंड किया है, इसमें प्रॉब्लम यही जा रहा है। बच्चों का क्या हो रहा है, वो टूल्स टूल्स ये सब यूज कर रहे हैं और क्लाउड में कर रहा है, ठीक है, ये सारे चीज आप अपने कंप्यूटर में भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। और साथ में आप वो सपोर्ट हो गया, कॉन्फिडेंस हो गया, सारे कोई भी एल्गोरिथम का इंटरनल जो चीज हो रहा है, खुद होके एक बार एनालिसिस नहीं करोगे तो आप सिर्फ यूज करते रह जाओगे, आप वो चीज को नया कोई एल्गोरिथम नहीं ला पाओगे या उस एल्गोरिथम को बेटर नहीं कर पाओगे। दैट इज नॉट एन रिसर्च स्पेसिफिक प्रोजेक्ट, देन we cannot call it as a research out of that is coming. Okay, so my suggestion is that always try to understand the internal facts rather than using the, you go for the tools, it's okay, but you also should try to understand what is the internal techniques or terminologies associated with that algorithm.
Then confidence. The confidence or strength for an association rule A implies B is the ratio of the number of transactions that contain A. फिर से देखो कॉन्फिडेंस और स्ट्रेंथ कभी कभी हम इसको स्ट्रेंथ भी बोलते हैं ठीक है ऑफन एसोसिएशन रूल A implies B is the ratio of the number of transactions that contains A कितने ट्रांजेक्शन में A appear हो रहा है ठीक है तो consider a rule A implies B which is the measure of the ratio of the number of tuples containing both and AB to the number of tuples containing A तो अकेला A कितना appear हो रहा है उस दोनों के बीच में तो उस पार्टिकुलर नंबर को हम उस पार्टिकुलर वैल्यू को हम क्या बोलते हैं कॉन्फिडेंस राइट एक सपोर्ट जब हम दोनों को साथ में कंसीडर करें और एक कॉन्फिडेंस जब हम एक को उन सभी टुपल्स में कितना अपीयर हो रहा है वो निकाल राइट so the support percentage of transaction is both these items together appearing and we have defined as support A plus B is equal to the number of tuples containing both A and B divided by total number of tuples then confidence sometimes called strength of this association rule A plus B is the ratio of the number of transactions that contain A. A rule A plus B, which is the measure of ratio of the number of tuples containing both and B, A and B, to the number of tuples containing A. So, if we write in the form of formula, you already got it, tuples containing both A and B divided by number of tuples containing A only. यही चीज सपोर्ट में क्या था टोटल नंबर ऑफ टुपल्स था टोटल ऑफ नंबर ऑफ टुपल्स में ए प्लस बी कितना साथ में अपीयर हो रहा था बट यहाँ सिर्फ ए को कंसीडर कर रहे हैं ठीक है क्योंकि ए से ही ए खरीदने से आपका प्रोबेबिलिटी क्या था बी अपीयर होने का क्या चांसेस था क्या कॉन्फिडेंस था राइट सो दैट इज सपोर्ट एंड कॉन्फिडेंस नाउ लेट्स टेक सम न्यूमेरिकल एग्जांपल I would like to suggest that first you try to solve it by yourself. No doubt I'm going to show it to you. Okay, एक बार screenshot ले लेना. Solve example of a priori algorithm. ये सारे जो चीज terms पढ़ रहा है, this is nothing other than that the terms that we have discussed, that is mentioned in a priori algorithm. Okay, find the frequent item sets in the given table with a minimum support of 50% and confidence 50%. Support क्या दिया है 50% ठीक है और कॉन्फिडेंस 50% ट्रांजेक्शन ये सब जो दिया है ट्रांजेक्शन आईडी है ठीक है और ये लिस्ट ऑफ आइटम 2000 में ए बी सी 1000 में ए सी 4000 में ए डी 5000 में बी ई एफ ये तो समझ में आ रहा है ना ए बी सी आ रहा है इस पार्टिकुलर ट्रांजेक्शन में ए सी आ रहा है ए डी आ रहा है बी एफ आ रहा है नाउ फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे can be for count is candidate ओके तो यहां जो है ना ये पार्टिकुलर ए बी सी डी ई एफ इसका कितने नंबर ऑफ टाइम्स अपीयर हो रहा है ये देख के मुझे बताओ जल्दी से ए कितना होगा Sir, 3. वेरी गुड सिमिलरली बी टू कितना था सी टू डी वन ई इसलिए मैंने बोला था इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना ठीक है ई वन एफ वन नाउ स्टेप टू कंपेयर द कैंडिडेट सपोर्ट विथ मिनिमम सपोर्ट हमें मिनिमम सपोर्ट क्या बोल रखे रखा है 50% होना चाहिए अब ए थी मिनिमम सपोर्ट हाँ ये एक बार करो मैं आई एम कमिंग बैक you try yourself I'm coming back within 1 minute
ओके कोरिया से पास ठीक ओके वेयर वी आर ठीक है तो दिस इज क्लियर ना इज दिस क्लियर हेलो am I audible or not Yes, sir. sorry so let's come back to it now compare the candidate support with the minimum support count so A B C ये डी ई एफ तो ऑफ कोर्स ये हट ही गया है 50% होना चाहिए 50% तो C22 मिला आपका नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या किया कैंडिडेट C2 फ्रॉम L1 ओके ये कैसे हो रहा है आपका इसमें से दोनों एक साथ कैसे अपियर हो रहा है कितने बार अपियर हो रहा है वो आपको फाइंड आउट करना है रिमेंबर दैट हमने सपोर्ट किसको कहा था नंबर ऑफ टुपल्स कंटेनिंग बोथ ए एंड बी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टुपल्स एंड कॉन्फिडेंस किसको कहा था हमने नंबर ऑफ टुपल्स कंटेनिंग बोथ ए एंड बी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टुपल्स कंटेनिंग ए ठीक है अभी हमें क्या निकालना है आपको ठीक है सपोर्ट राइट ए बी साथ में कितने बार अपियर हो रहा है 1, ओके तो ए बी उसके बाद ए सी 2, ओके देन बी सी बी सी जल्दी देखो इसको हाउ मेनी टाइम्स बी सी अपियरिंग टुगेदर 1, 1. वन सो नाउ ये आपने निकाल लिया ठीक है ये तो आ गया ना समझ में ए सी बी सी देन आपको क्या निकालना है वो जो सबसे ज्यादा वैल्यू अपियर हो रहा है ठीक है तो आपने देखा ए सी कितने नंबर ऑफ टाइम्स अपियर हो रहा है साथ में 2 ओके सो इनमें से सबसे ज्यादा जो वैल्यू है किसमें असाइन कर सकते हो आप आर यू गेटिंग मी ए बी 1 say AC2 BC1 now we need to find out that one which has the maximum support value so that is which one जल्दी बताओ AC. AC. वेरी गुड सो दैट्स इट हमने पहले क्या किया सभी का आपने कितना ए बी सी वैल्यू ए बी सी डी ई एफ सबका कितने नंबर ऑफ टाइम्स अपियर हो रहा है उसके बाद हमने उसमें से जो पिक अप किया वो जिसका कॉन्फिडेंस ज़्यादा हो मतलब 50% से अधिक हो और उनका साथ में सपोर्ट निकाला ठीक है कॉन्फिडेंस से हमें एक आइटम का मिल गया था उसके बाद सपोर्ट में क्या होगा कितने साथ में अपियर हो रहा है राइट और उसके बाद लास्ट टेस्ट में हमने क्या किया दिस पार्टिकुलर इसको हम क्या बोलेंगे एसोसिएशन रूल मीन्स ए implies to सी that has the highest support value and that is what your a priori algorithm will imply those particular rules which has the highest value of support right but these things we have considered only for this number of transactions but what would happen suppose there are 1,000 number of transactions ठीक है ये हमने सिर्फ कितने टुपल्स कंसीडर किया एक दो तीन चार ओके so that's why we can calculate it manually but what would happen if this is the case of a large item set where more than 1,000 transactions are there we cannot go for manually calculating it so that's why we use a priori algorithm right so today I want to give you a simple question to all of you after very means after I think many lectures I have asked this question. I'm going to ask this question that you will find out who has proposed a priori algorithm and you comment the answer. Question समझ में आ गया? Is my question clear to you? आप जरा सा सर्च Yes, sir. करके ये देखोगे कि एक प्रायोरी एल्गोरिथम किसने प्रपोज किया था वो आप बताओगे कौन
ये करके ठीक है comment. Okay. Now I'm not going to extend this class anymore. I will terminate this class now. Okay. So I think today also you have presentation, right? आज presentation है क्या आप लोगों का? Yes, Do you sir. have presentation? Yes, sir. Okay. So I will inform to group. So that's it.